मंगीला चौधरी मंगीला चौधरी सर वो मेरी कुंडली में लिखा है मेरी क्या गलती है उसमें अच्छा ब्रैकेट में मोहित लिखा है क्या है कोई थैंक गॉड मंग गया ओके गाइस ओके नेक्स्ट टॉपिक सर्कल्स का डेफिनेशन क्या है व्हाट इज अ सर्कल जिसमें कोई साइड नहीं होते एवरीवन अगेन लिसन टू दिस डेफिनेशन अगर एक फिक्स्ड सेंट्रल पॉइंट है and there is this point at a fixed distance r from the central point and now this point p moves in such a way कि distance r is always fixed so it forms a locus. Locus is basically a collection of points moving in a specific parameter मतलब कुछ the collection of all these points forms a figure called as circle. लोकस अभी वो जो कलेक्शन है उसी को लोकस बोलते हैं एक्चुअली लोकस विल स्टडी नेक्स्ट ईयर मतलब वो कलेक्शन को ही लोकस बोलते हैं ठीक है। तुम्हारे रास्ते पे कोई चतुर रामलिंगम मिल गया बोले कि बेटा आपको बहुत उठ रहा है मैथ्स में सर्कल का डेफिनेशन बोलो तो बता दो ठीक है उसको बोला भाई सेंट्रल पॉइंट से एक पॉइंट है उसको ऐसे मूव करा कि द डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड यू विल गेट दिस फिगर ठीक है। नाउ just like for normal figures we have perimeter for circle the boundary is called circumference which is 2 pi r correct ठीक है and area of the circle is pi r square ये प्रूफ लास्ट टाइम मैंने बताया था एरिया का प्रूफ एरिया का प्रूफ चाहिए इस पर्टिकुलर फिगर का आउटलाइन का लेंथ कितना होगा pi r is Roman can you guys see in this see this half circumference ठीक है can you also see this straight line is this r plus r which is so can I say my total outline देखो ये half circumference मतलब c by 2 plus d this 2r can also be called as diameter of the circle तो c by 2 plus 2r या फिर if I put this 2 pi r by 2 plus 2r so 2 I'm getting pi r plus 2r या फिर 2 pi r plus d चलेगा guys please note this down ये थोड़ा important है कि सेमी सर्कल का the outline is half of the circumference plus this straight line which is 2r guys एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस टेक्स्ट में है एवरीवन लुक हियर दिस इज माय सर्कल जी नाउ आई टेक टू रेडियस सो ये जो फिगर है ना दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर ठीक है सो नाउ एवरीवन लिसन ये जो सेक्टर है इफ दिस एंगल इज थीटा ठीक है तो सेक्टर का एरिया विल बी थीटा बाय 360 इनटू थीटा इज द एंगल ऑफ दिस सेक्टर प्लीज ये प्लीज व्हाट आर यू सर वो क्यों क्या है क्या क्यों ये जो सेक्टर का जो एंगल है ना थैंक यू सो मच एंगल बिटवीन टू रेडियस उसको थीटा बोलते हैं आई गिव एग्जांपल एवरीवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वाड्रेंट हां ऑल्दो यू मेंशन ये लेकिन अगर आ गया क्वेश्चन लेट्स नॉट टेक इट एज
It's done last year. तुम बताओ एग्जाम बताओ. ठीक है. सर्कल का चैप्टर 2. Now let's understand this question. भाई आज तुमने कौन सा लार्ज वाला पिज्जा खाया या फिर मीडियम? Small, sir, medium. अबे गरीब. मीडियम भाई मीडियम तो खिलाना. ऐसा सारे खाया आपने खिलाया ना. अरे फिर तो खिलाना है लोगों सर को. वो अपने साथ एक साथ ये लोग उसमें भर भर हाँ, के- पेड़. अच्छा. Now suppose a medium sized pizza has how many slices? 6. So ये सर्कल है. From the center of the circle I have 6 equal slices. सर इक्वल नहीं होता है, नहीं होता है, भाई यार. मेजर कर लेंगे. तो now 360 degree is getting divided equally into 6. तो कितना होगा? 60. So if I ask the area of each pizza slice, everyone write it down. Medium size. Hey, what about regular size? Small, very small. Each circle will have how many slices? Sir, line here please. तो मुझे बताओ 360 degree is divided to 90, 90, 90, 90. I am saying one slice का area कितना है? सब निकालो. Radius. Radius 10. Radius. Again 10. Radius. 10. Guys, whenever they talk about sectors, just think of these pizza slices. So everyone, each regular size slice of a pizza has 90 degrees. So theta is 90. So 90 by 360 into 22 by 7 into 55 divided by 7. सर रेडियस क्या है? Sir, 7.5. 10 centimeter. 7.9. 9 1 जा 9 4 जा. नहीं, that's all. नहीं 78.8. You should have 7.8. excuse me. 550 by 7, right? 7 7 or 49. चुप को मारो तो चुप कैसे करेंगे? 1 5 7 1. Sir, 17.5, sir. 17.5. So if we round off this 78.57 units, guys. So मुझे बताओ, can I find area of shaded region? Area of square minus क्या करूँगा? Will I minus this area? Area of chord where theta equal to 90 degrees. सबको समझ रहे हैं? तो मुझे बताओ area of square कितना होगा? 14 into 40. Side square minus. I have just given you the formula of sector. तो theta कितना है इसमें? 1/4 into 90 by 360 into pi. I think they have said 22/7 into 40. they have said take pi as 20 by 7. Into 14 into 40. 7 1 जा 7 2 जा 0 0 9 Sir, 20 into 7. 9 4 जा Sir, वो class में आ गए. 2 2 जा आपको बोला एक 2 1 जा 2 everyone 14 square is 196 minus रुक जाओ guys 22 7 जा 22 into 7. 40 to 40 to 40. unit Centimeter square. तो सबको समझ रहा है everyone in this they gave a quadrilateral, they gave this first part as a quadrant. So the shaded region is area of square minus area of quadrilateral. क्या ये वो सेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट समझ में आया? सही है सब लोग को? सर पर ऐसे क्वेश्चन में समझ में कैसे आएगा कि वो पार्ट में ही अप्लाई करना है कि ये वाला? If you see an arc, वो arc सर्कल का ही है. Because this आज ऐसा साइड होता तो इसका अंदर अगर ऐसे होता अच्छा, हाँ. then we will do circle. जो मतलब जो सर्कुलर आर्क it is pointing towards the
वो वाला अगर it was like this, then this will be 90. हाँ बोलो. Find the radius of the circle which is circumference equal to the sum of the circumferences of these two circles. So they have given us two known circles. पहले का रेडियस कितना है? 25 and दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है? 18 सेंटीमीटर. Now there is this unknown circle जिसका आपको रेडियस I do not know, R3, but they have given some connection between circle 1, circle 2 and circle 3. Can you guys tell me the connection? Question number 5. So will C1 plus C2 be equal to C3? Yes. First का circumference plus second का circumference equal to third circle का circumference. Is this my given? सही है? So now I do not know the radius. Can I say let R3 be R centimeter? ठीक है? Guys, ये assumption है. So if I put all the values, I will get an equation in R. So let's solve. C1 is 2 pi 25. 2 pi R plus 2 pi 18 equal to 2 pi R. Now everyone, please try to solve these equations in this form. क्योंकि इसमें ना जो pi quantities है, they will always get eliminated. Can you see 2 pi common? If I take 2 pi common, can I just remove 2 pi? Am I getting 25 plus 18 equal to R? सही है? This is या फिर R is equal to. Now what are they asking the question? Do I need to? हाँ? Please write a note. If you solve C1 का separate value, उसमें pi का value put करा, it will be a very long calculation. Can you guys see here? Simple 2 pi cancel. क्या तुम्हारा काम simple हो रहा है? So अभी इस chapter में ना the concepts are simple, लेकिन ये जो calculation है ना, just try to solve in this way. अगर तू separate करेगा ना RF तो बहुत लंबा calculation होगा. Plus see this 25 is not a multiple of 7. तो इसको 22 by 7 लेगा, you will get some weird fraction इसमें भी. तो it's not a good calculation. तो सबको समझ रहे हैं? We will solve throughout this equation. इसमें pi का values generally eliminate होता है. सही है guys? तो ये नया चेंज सर्कल्स में guys वो pi r square 2 pi r separately मत करना. The calculations will become complex. And the circumference equal to the difference of the circumference of the given circles. अच्छा, so I have 48 centimeter and 13. So my radius 1 is 48 centimeter. What about my radius 2? 13 centimeter. And my radius 3 is unknown. So let R centimeter. R3 be R, everything is centimeters. Same process. But now they are saying the difference of first two का circumferences is equal to the third circumference. इसमें which circle is bigger? क्योंकि radius बड़ा है. तो will I do C1 minus C2 equal to C3? Last question क्या था? C1 plus C2 equal to C3. Again, C1 का value 2 pi, R की value 48 minus 2 pi, C2 का 13. And since C3 का radius is R centimeter, it will be 2 pi R. Everyone again algebra. 2 pi common. Divide each term by 2 pi. So will I cut this? See, only if the term is common in each and every term in the given equation I can cut it. गलती से अगर if it was 10, can I cut this? Can I cut 2 pi? If I have one more term which is 10, no right? So let's go. 48 minus 13 equal to R. तो ये कितना है? 35. So radius is coming as 35 centimeter. But are they asking the radius or something else? Area. So A3
is pi r3 square. तो 22 by 7 into 35 into 35. 7 ones are 7 fives are 110 into 35. कितना है? 3850. Simple guys. So everyone, question 5, question 6, they are just connecting तीनों circles का circumferences, where my third circle is the unknown radius. Just एक figure है. 4 equal circles are given guys. अरे यार, now ignore my drawing. कोई बात नहीं The outside figure is a square of 28 centimeter. 28, 28, 28 and 28. Can you guys tell me ये circle का all the 4 circles will have the same radius because all the circles are equal. तो क्या कर सकते हैं इसका? If I just connect the diameter of these two circles together, क्या ये पूरा length which is see this is r, this is r, this is r, this is r. So can I say 4 times r is 28 centimeter? Yes. So r is coming as the moment you have found each circle का radius, ये जो shaded region है, everyone please look at your textbook. भाई मोहित area of shaded region कैसे निकालेंगे? Figure को देख bro. Will it be outer square का area minus 4 times एक circle का area? Will it be outer square का area? Outer circle? एक मिनट, ऋषा ना, where did you sit? मोहित का सुन रही है तू? मोहित is not a good frame of reference, guys. प्रबल का सुन रही तो I can accept. ये इसका भी सुन रही तो भी ठीक है. Outer circle चला गया, ठीक है? Area of outer square minus. Now guys, will you find all the 4 circles area? अगर all the circles are equal, I can just do 4 times area of 154. everyone please look at this guys. भाई ये कॉन्सेप्ट बहुत important है. ए मोहित फॉर्मूला दिख रहा है area of shaded region. By figure, depending on the figure, you will have to apply your imagination. तो ठीक है, let's go guys. Outer square 784. 20 into 28 minus 4 times. The radius came as 7, no? So 22 by 7 into r square. So 7 cut 54. 28 into 28 784. 78. Minus 4 times 6 22 sevens are 154. 784 minus 616. That is 168 centimeters. 40 minus 6 is 8. 168 centimeters square. So area of shaded region, guys, please. Now the class is sharp. ये chaotic group है ना भाई. Please. सबने किया ये? हाँ. Everyone look here. भाई सब लोग please look at this concept. अगर मेरे diameters है 10 centimeter, 20 centimeters and 30 centimeters. इन तीनों diameters का suppose D1, D2 and D3. 5 times 15. इन तीनों diameters का ratio क्या होगा इस?
1:2:3. I just want to show something. इसका रेडियस क्या होगा R1? 5 सेंटीमीटर. Radius is half of diameter. R2 will be 10. what about R3? Now everyone, if you take the ratio of R1 is to R2 is to R3, कितना है? 3. So can I imply if the ratio of diameters is 3:5:6, so what will be the ratio of the radii? So please everyone write a note with the ratio is. 3:5:6. So therefore R1 is to R2 is to R3 कितना होगा? अरे भाई सेम रेशियो होगा अभी. नोट क्या लिखा है? कि diameters का रेशियो और radii का रेशियो actually they come to the same values. So now see this was not given, लेकिन मैंने ये imply किया है. So now if these are my respective ratios of radii, assumption क्या होगा? Let R1 be एक तो 3x या फिर 3 times smaller. R2 will be 5 times R and R3 will be 6 times R. क्या सबको step number 1 समझ गए? Assumption. Whenever they give the respective ratios, हम लोग उसके values times x, but here I am using the variable small r. सही है? Now step number 2 क्या होता है? Forming the equation. What is given in the question is, if you read carefully, तीनों का sum of circumferences मतलब C1 plus C2 plus C3 is 308 centimeter. बढ़िया? Now if I put C1 का value as 2 pi R1, C2 as 2 pi R2 and C3 as 2 pi R3, I will get an equation in R. Let's put it 2 pi R1 का value कितना है? 3R. 2 pi R2 का value कितना है? 5R and 2 pi times 6R is 308. Everyone, how can I handle this? Can you see 2 pi common? So take 2 pi as common. अंदर बचेगा 3R plus 5R plus 6R. सबको समझ रहा है? Why did we study algebra now? For simplifying all these complex calculations. So if I solve it, 2 times pi, 3R plus 5R plus 6R is 14R is equal to 308. Now everyone see this 14 is a multiple of 7. So you can put pi ka value 22 by 7. Until now each question is solved by pi ka value as 22 by 7. So in this chapter we are taking pi as 22 by 7. 3.14 लेंगे because every value is divisible by 7. 14 times R equal to 308. 7 ones are 7 twos are 22 is 44 into 2 equal to 8. 1 minute. If I keep R on one side, R is equal to 308 upon 44 into 2. 1 minute. This is divisible by 11. 11 fours are 44. 11 twos are 22. 11 eights are 88. 4 ones are 4 sevens are. So radius is coming as 7 by 2, which is 3.5 centimeter. This is a good question, guys. Everyone please start on question number 12. सर और है अच्छा क्या लिखा है इसका? डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ रैडियस एंड द ओके ठीक है. Everyone, my R का value came as 3.5, but क्या ये मेरे radii के आंसर्स है? So if I put R as 3.5, so 3 times 3.5 is इसका कितना होगा? 5 times 3.5 which is
35, 15, 17.5 and 6 5s are 30, 6 3s are 18, 21 centimeter. So my तीनों रेडिया के आंसर is 10.5 centimeter, 17.5 centimeter and 21. Which radius will give me the highest area? 21. And the smallest area? 10.5. So उन्होंने वही बोला है कि biggest area is A3 minus smallest area is A1. तो A3 minus A1 निकालना हम लोग इस. That's my final answer. So pi times 21 का square minus pi times. Hey everyone, now listen. इसमें मैं थोड़ा algebra करने वाला हूँ. देखते कितने लोगों को समझ आता. You will actually love this thing. कौन इसका स्क्वायर निकाल रहा है? 10.5. रुक जा, वेट कर सकते हैं. कौन 10.5 का स्क्वायर निकाल रहा है? बहुत लंबा होगा. Look here guys. If I take pi common, will it be 21 का square minus 10.5 का square? Any algebraic formula here? A square minus B square. A square minus B square कितना होता है? A plus B plus A minus A. So can I write this as 21 plus 10.5 into 21 minus 10.5? सब लोग देख लो. A square minus B square. तुम लोग अगर रफ में इसका स्क्वायर निकालते तो भाई टाइम निकल रहा है. बट आई जस्ट सॉ कि a square minus b square is a plus b into a minus b. सबको समझ रहा है? So if I just put this is 31.5, this is 7 1 7 4.5. 22 into 45 by 10 into 105 by 10. 5 9s are 5 2s are 5 2s are 1s are 5 2s are 2 1s are 2 11s are 11 9s are 99 into 21 by 2. into 21. 9 7 1039.5. ठीक है. Which other method do you have? पहले रेडियस आ गया, उसके बाद दोनों का अलग-अलग स्केल करके तो सबट्रैक्ट. सेम ही है. बस आंसर सी है. तूने और लेनी है. ठीक है, भाई सब लोग ध्यान दो. Suppose I have this circular wheel. ठीक है. Now this is my point A. चलेगा? Now this wheel is going to revolve. Suppose एक revolution में it reaches this point. और ये point A वापस पूरा घूम के यहाँ पे आ जाए. चलेगा? So the property says if this is my radius of the circle, this distance in one revolution is always 2 pi r. क्या सबको पता है ये? If this circular wheel revolves once, मतलब ये जो point है पूरा घूम के it keeps on revolving एक चक्कर. This entire distance traveled, ये जो distance traveled है, this distance traveled is always 2 pi into radius of the circle. क्या ये 2 pi r is nothing but my circumference? सही है? तो now if they say total distance traveled, if they give total distance traveled given है, and they are asking number of revolutions. So how can we find this number of revolutions of this circular wheel? Can I go for total distance upon
distance traveled in one revolution. चलेगा guys? इससे मुझे number of revolutions of this circular wheel आ जाएंगे. सही है? Please copy this. What is the formula which connects speed, distance and time? Speed is equal to distance by time. सही है? Now look at the conversion of different speed vectors. Suppose I have 1 kilometer per hour. ठीक है? This is 5 by 18 meter per second. क्या सबको पता ही है? Yes. Now if I have 1 meter per second, तो इसका उल्टा, which is 18 by 5 kilometer per hour. ठीक है? And the third conversion, which is 1 kilometer per hour, और इसका मैंने ट्रिक बताया, but just remember 50 by 3 kilometer per minute. या फिर मीटर पर मिनट. 1000 by 3600. नहीं, 1000 by 60. 1000 by 60 0 0 50 by 0. ठीक है. Especially जो कॉमर्स में है, I think RF and तुम लोग को you don't have physics, right? तो ये सब फिजिक्स हम लोग करते हैं. तो if they give these weird speed का units, तुम लोग को ये सब कन्वर्जन पता होना चाहिए. तो प्लीज देखो. I think rest of the science kids should be able to convert all of these units. How can we do this, guys? Sir, मैं बोलती हूँ. 3 by 50 into The answer same. सही है. Okay, guys, see, we can do like this. मेरा जो मीटर पर मिनट है, which formula connects meter per minute? This one, right? Yes. Now I have. Can I write this as 50 into 1 meter per minute? Yes. चलेगा? Now, अगर 1 kilometer per hour is 50 by 3, तो if I send this इधर, क्या 50 by 3 kilometer per hour will be 1 meter per minute? सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है? तो 1 meter per minute का वैल्यू लिखना है. तो replace this with 50 by 3 kilometer per hour. सही है? If I put this here Into 1 मिनट, इसको 1 मिनट उल्टा होगा, ऊपर जाएगा. 3 by 50 किलोमीटर पर आवर. 50 and 50 का आंसर क्या है? 3 with the unit. सबको समझा ये? ये फिजिक्स में चैप्टर 1 में हमने किया है. बट बाकी कॉमर्स किड्स प्लीज आरो भाई बोलो तो मिस्टर रोहित 6 7 भाई 6 7 नहीं थे सर. बट मैंने आंसर से बोला ना. डायमीटर, अगर डायमीटर 80 सेंटीमीटर, रेडियस 40. रेडियस इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. अभी वो बोल रहे हैं हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग. तो मतलब स्पीड इज गिवन. स्पीड कितना है? 66 किलोमीटर पर 66 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो 10 मिनट्स टाइम इज ओए क्या हो गया? पानी क्या होता है? It's outside the class. नहीं पर सर इधर बस क्लास तो आए सर मेरे ऊपर भी जाएगा. अरे यार नहीं यार. ए सब लोग देखो. Are these quantities given in the question? भाई ध्यान दो. I need to find number of revolutions. क्या number of revolutions के लिए I need total distance traveled in this time. सर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट. रुक जा. How can see speed is given, time is given. How can I find the distance? Speed into time. क्या distance is equal to speed into time? Yes. लेकिन the units are not matching. ये किलोमीटर पर आवर है, ये 10 minutes है. How minutes को 8 मिनट. 10 minutes is how many hours? 0.0. See, अगर किसी को भी दिक्कत है ना, see, 1 hour is 60 minutes. Everyone remembers? No.
बेटा should I tell your maths marks to everyone? No. Continue. ये यूनिट में प्लीज अभी ये कन्वर्जन कभी भी नहीं हुआ ना भाई, तुम लोगों को यूनिट में लगाना है. If you do not remember 1 hour is how many minutes? 6. अभी जब 10 minutes है तो वो कितने hours है? Can I call this as x? If I cross multiply, is it 1 into 10 equal to x into 60? So 10 by 60 equal to x. तो कितना आ रहा है? So basically this is 1 by 6 hours. ठीक है? तो I can convert this as 1 by 6 hours. तो अभी किलोमीटर पर आवर एंड आवर, can I put these quantities यहाँ पर? So distance will be 66 into hour is 1 by 6. मुझे बताओ स्पीड का यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, टाइम का यूनिट इज आवर, तो मेरा डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? किलोमीटर है. तो 6 1s are 6 11s are distance is coming as 11 kilometers. बढ़िया. Now number of revolutions is total distance upon distance in one revolution. क्या 1 revolution का distance is 2 pi r. So if I put 11 kilometers upon radius 40, so 2, let me write this as 20/7. लेकिन this is in centimeter guys, 40 centimeter. तो is there a mismatch of unit guys? Yes. So ऊपर का जो किलोमीटर है उसको सेंटीमीटर में ही बना दो guys. तो if I solve this, 11 kilometer is 11 into 1000 meters, and 1000 is 100 upon 2 into 22 into 40. Nothing is getting cancelled. ठीक है, let's start. 11 into 1000 into 100 upon into 7, 2 into 22 into 40. 11 ones are 11 twos are 2 ones are 2 50s are 0 0, 2 ones are 2 500s are. और क्या बचा? 500 5 and 7 and 4 is remaining. तो 4 ones are 4 10, 4 twos are 8, 20, 4 5 are 25. So 125 into 5 into 7. So 125 into 5 into 7. 125 5s are, या फिर 125 into 35. 4,375. So number of revolutions given as 4,375. सेंटीमीटर में आता है. So 1 kilometer तो directly in centimeter is 10 to the power 5. ठीक है भाई, ये यूनिट्स में गड़बड़ किया. Radius 21 होगा. Okay. Each wheel makes 1200 revolutions per minute. और हमें speed train का speed. So can you guys tell me what is given in the question? Number of revolutions हाँ. 1200. Is time given guys? No. 1200 revolutions per minute. क्या मतलब 1 मिनट में इतने revolution हुए? तो time is technically given 60 seconds. ठीक है. Now radius अगर back कितना है
42 radius 20. अगर diameter 42 centimeter है, my radius will be half of it, 21 centimeter. So number of revolution given है, time given है, radius given है. I need to find the speed of the train. तो क्या speed will be distance upon time guys. Now I have time 60 seconds, लेकिन distance पता नहीं है. I have just given you number of revolutions and total distance कैसे निकाल सकते हैं? Total distance into time. Is total distance equal to number of revolutions into एक revolution is everyone again by number of revolutions into एक revolution का distance multiply करेंगे I'm getting total distance. सबको समझ रही है? तो let's find number 1200. 2 into 22 by 7 into r कितना है 21. 21 का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर. तो 7 1s are 7 3s are. This is 2400. 22 3s are 66 centimeter. 85. सबका है 158,400 centimeter. Now generally we can give the speed का value either in meter per second या फिर kilometer per hour. So let me give the answer in meter per second. So everyone tell me if 158,400 centimeter है, how much will that in meters? 1584. Will it be 1584 meters? Yes. So total distance is 1584. Total time is 60 seconds. Can I find speed equal to distance by time? 1584 upon 60, right? ये divide करें पूरा. Let's try. This is divisible by 2 as well as 4. Guys, 4 के लिए कैसे करते हैं कि this number is completely last 2 digits को देखो. Sir, 21.4 meter per second. हिंदी में समझा. 26.4. Hey everyone, like please ध्यान देखो. जिसको भी जो भी 2 से कर रहे हैं इसको डिवाइड देख लो. इसको जल्दी डिवाइड आप लोग 4 से कर सकते हैं. Look for the last 2 digits. क्या 84 4 डिवाइड में है? What about 60? Before 15s up. So this entire number is divisible by 4. So 4 15s up. 4 3s are 12. 4 9s are 36. 4 6s are 24. 26.4. Go for 3 3 5s are 15. 3 1s are 3 3s are 3 2s are. So 132 by 5. Sir, direct 26.4. 5 2s are 10. 5 6s are 30.4 meter per second. So speed is coming as 26.4 meter per second. Everyone, पीछे चेक करो मीटर पर सेकंड में क्या किलोमीटर पर सेकंड. 95 कन्वर्ट कर देंगे ठीक है चलेगा. 26.4 meter per second. I have just given the connection between meter per second and kilometer per hour. 26.4 into 1 meter per second. इसको रिप्लेस करो किलोमीटर पर आवर. 5 5s are 25. 40. 5 2s are 10. 5 8s are 40 into 18. निकल लेते हैं. 8 8 are 64. 8 2 are 60. 22. 8 5 are 40. 40159. So 95.04 kilometer per hour. But they had not specified in the question कि give your answer in kilometer per hour. तो
तो मैंने मीटर पर सेकंड दे दिया, दैट्स गुड इनफ। टीचर को अगर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, शी हैज टू स्पेसिफाई दैट इन द क्वेश्चन। ऐसा ही तो अपना मीटर पर सेकंड। Solving problem of order, let's do notebook out together, the moment really doubt. I'm solving problems one beat at a time. I see math is a puzzle, and the solution is mine. And the solution is mine. And the solution is mine.